हेलो फ्रेंड्स, स्वागत जनाऊँ वर्तमान क्लास को। आशा करुँच तुम मैंने समस्ते बहुत भलरे थिबो एवं निजर एग्जाम कि बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन भी करुथिबो। तो सांग मैंने वर्तमान आमे मैंने लाइव आसी सारी। जदि मोर वॉइस क्लियर अच्छी एंड स्क्रीन भी विजिबल अच्छी देन मते फर्स्ट के कमेंट सेक्शन रे जणाई दियो, देन आमे मैंने क्लास टी को स्टार्ट करबा। वॉइस एंड स्क्रीन बोथ जदि विजिबल ऑडिबल अच्छी ताहले मते के फर्स्ट कमेंट सेक्शन रे जणाई दियो। Okay, all clear? Okay then. ठीक अच्छे, तो जल्दी जल्दी आसिक समस्ते जॉइन करी जाओ क्लास रे। अति शीघ्र आमे माने क्लास टी को स्टार्ट करबा। ठीक अच्छे तेबे तो जो माने भी वर्तमान लाइव अच्छ समस्ते टिके रिक्वेस्ट करूची कि समस्ते आसिकी टिके जणाई दियो वॉइस एवं स्क्रीन बोथ आर विजिबल एंड ऑडिबल। ओके देन ठीक अच्छे, ऑल क्लियर। तो सांग मैंने जमती तुमने जानिछ आज भी आमे माने पॉलिटी उपरे किछि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करबा। ठीक अच्छे, तो पॉलिटी रु तुम मैंने जानिछ एसएसबी रे तो हमर 12 मार्क रो क्वेश्चन आसीबो एवं ओएवी रे मध्य हमर बहुत गुडे क्वेश्चन आसबार संभावना रही। ठीक अच्छे, तेबे चलो हमर पॉलिटी रो मोस्ट इंपोर्टेंट आउ गोटे क्लास को आमे माने आज डिस्कशन करबा। तो गतकाली रो एवं आज रो बोथ रो पीडीएफ मु तुम माननको टेलीग्राम चैनल रे शेयर कर देबी, जोटा कि मु एपर्यंत मध्य करना एथिलागि जे आज रो क्लास एका बेले पॉलिटी रो दुईटा जाक क्लास रो पीडीएफ एका बेले तुम मानको शेयर करा जिवो एवं हिस्ट्री रो मध्य ता सहित जदि ओडिया रो किंबा गतकाली रो जो सोनाली मैम जो क्लास करथिले किंबा आज रो जो क्लास करथिले जहार भी पीडीएफ जदि अवेलेबल नाही तार भी आज शेयर कर दिया जिवो। ठीक अछि, ओके। तो जल्दी जल्दी आसिके समस्ते जॉइन करी जाओ क्लास रे। तेबे चलो और डेरी न करिके क्लास टी को स्टार्ट करबा। टेलीग्राम चैनल रो जो लिंक रही तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे दिया जाइछि एवं ता सहित पिला माने समस्त को रिक्वेस्ट करी कि वर्तमान जहाँ भी हमर क्वेश्चन रोहुची से क्वेश्चन आंसर तुम माने चैट सेक्शन रे दबा लागि ट्राई करो। चैट सेक्शन रे समस्त एक्टिव रहो टिके। ओके ओके देन तेबे चलो क्लास टी को स्टार्ट करबा डेरी न करिके। तो फर्स्ट क्वेश्चन टी हमर कोन रहिछि देखो, which amendment of the Constitution of India increased the age of retirement of High Court judges from 60 2 years? 10th, 12th, 15th, 5th? माने एडी पचारुछि हमकु एमान को मध्यरु को अमेंडमेंट हम संविधान रो को अमेंडमेंट अनुसार आम भारत रो जो हाई कोर्ट गुड़िक रही से हाई कोर्ट रो जजेस मानकर बयस सीमा 60 रु 62 वर्ष को वृद्धि कर दिया जाइछि। को अमेंडमेंट 10तम 12तम 15तम कि 245तम अमेंडमेंट अनुसार। ताहले यार करेक्ट आंसर टी कोन हबो? एठी यार करेक्ट आंसर टी कोन हबो जानिछ जदी कमेंट सेक्शन रे जणे दियो, भूल हो किंबा ठीक हो। को अमेंडमेंट अनुसार भारत रो जो राज्य गुड़िकर हाईकोर्ट रही से जजेस मानकर बयस सीमा 60 रु 62 को बढ़ाई दि जाइछि को अमेंडमेंट अनुसार कहला देखी। ओके समस्त को रिक्वेस्ट समस्त आंसर दियो। ठीक अच्छे, तेबे तो यार करेक्ट आंसर टी होचे ऑप्शन सी 15th 15तम अमेंडमेंट अनुसार आम भारत रो जो कॉन्स्टिट्यूशन रही भारत रो विभिन्न राज्य माने रही से राज्यर जो हाईकोर्ट रही जजेस मानकर समय सीमा से हाईकोर्ट रो जजेस मानकर बयस सीमा समय सीमा नहीं बयस सीमा 60 रु 62 को बढ़ाई दि जाइछि। देन क्वेश्चन टी चलो देखिबा। नेक्स्ट हमर क्वेश्चन रही, हाउ मेनी टाइम्स ए पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, नो बार? जड़े व्यक्ति भारतर राष्ट्रपति हबाकू हेले बा भारतर जदि से राष्ट्रपति हुंती ताहले तांको आमे केते थरो चूज करि परिबा हमर राष्ट्रपति भाबरे? गोटे थरो, 2 थरो, 3 थरो किंबा नो बार माने से केते थरो भी हेई परिबे प्रेसिडेंट, सेमिति किछि बाउंड्री नाही। यार करेक्ट आंसर देबे कोन हबो? समस्ते आंसर दबा लगी ट्राई करो। हाउ मेनी टाइम्स ए पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया?
भारतर राष्ट्रपति भाव में जड़े व्यक्ति को आम केते थर निर्वाचित करिपरिबा गोटे थर दुई थर तीन थर किंबा 9 बार। तो यार करेक्ट आंसर टी कौन हम 9 बार। से केते थर भी राष्ट्रपति हो पारे आम बहुत थर चूज करिपरिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन नीड्स ए स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट? चेंज इन फंडामेंटल राइट्स, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, abolition of legislative councils in the state, rules and procedures in parliament। एठी हमको क्वेश्चन रे कोन पचारला एमान को मध्यरु को प्रोविजन टा नीड करि थाए गोटे स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट रे? चेंज इन फंडामेंटल राइट रे किछि चेंजेस आनिबा को ना न्यू स्टेट रो क्रिएशन लागी ना लेजिस्लेटिव काउंसिल रो एबोलिशन लागी ना रूल्स एवं प्रोसीड्यूर्स जहा कि पार्लियामेंट रे हेथाए सेथि लागी प्रोविजन गोटे स्पेशल मेजॉरिटी को नीड करि थाए। ताले यार करेक्ट आंसर कोन हबो? ऑप्शन ए बी सी डी। समस्त कमेंट सेक्शन में आंसर दबा लगी ट्राई करो। एमान को मध्यरु को प्रोविजन गोटे स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट रे नीड करि थाए? देख यार करेक्ट आंसर टी होची चेंजेस इन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट को जेतेबेले चेंज करबा कथा आसे सेतेबेले निहाती भाबरे पार्लियामेंट रो स्पेशल मेजॉरिटी नीड पड़ी थाए कारण उभय सभार बा लोकसभा एवं राज्यसभा उभय गृहर निष्पत्ति जहाँ हुए से ही फंडामेंटल राइट को चेंजेस करी हबो तो स्पेशल मेजॉरिटी नीड होता है। देन क्वेश्चन टी रही हु इज द कस्टोडियन ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया? एटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि बारंबार एग्जाम रे आसुची। एठी तुमे माने मन रखिबो हु इज द कस्टोडियन ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया? ए टाइप रो क्वेश्चन दी तीनटा रही तो यहाँ को बुले बाले कि पचारे बट ये जो क्वेश्चन टी रही हु इज द कस्टोडियन ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया? द प्राइम मिनिस्टर, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द प्रेसिडेंट, द फाइनेंस मिनिस्टर। तो यार करेक्ट आंसर टी कौन हम? एमान को मध्यरु देख कस्टोडियन ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया किए? प्राइम मिनिस्टर कि प्रेसिडेंट कि फाइनेंस मिनिस्टर कि जजेस बा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? यार करेक्ट आंसर टी कौन हम? हु इज द कस्टोडियन ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया? यार करेक्ट आंसर टी होची प्रेसिडेंट। ओके प्रेसिडेंट आउ प्राइम मिनिस्टर भितर किना पिला माने कंफ्यूज हो जाई थांती। एठी तुम माने कंफ्यूज हबो नाही। कंटीजेंसी फंड हबो कोन? कंटीजेंसी फंड होची प्रेसिडेंट। ओके ऑप्शन सी होची यार करेक्ट आंसर। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। India has taken the concept of judicial review from which country's constitution? United States, United Kingdom, Canada, Ireland। judicial review judicial देख जेते सबू JU वाला आसीजिबो ना जजेस जुडिशियल तो JU वाला जेते सब आसीजिबो तार आंसर गोटे ही आसीबो। ए ऑप्शन रु जोटा आसीबो से JU कथा मन पके दबो तो यूनाइटेड स्टेट्स कि यूनाइटेड किंगडम कि कनाडा कि आयरलैंड। पिला माने समस्त को रिक्वेस्ट करूची आंसर दबा लगी ट्राई करो कमेंट सेक्शन रे। एठी हमको क्वेश्चन रे कोन पचारची इंडिया हैज टेकन द कांसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम व्हिच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, आयरलैंड। आम भारत जुडिशियल रिव्यूटा को कंट्री रु बर करिछि? यूनाइटेड स्टेट्स रु, यूनाइटेड किंगडम रु, कनाडा रु कि आयरलैंड रु? तो मन रखिबो जुडिशियल रिव्यू एवं जेते सबु JU जजेस एगुड़ाक सब JU वाला जेते सब रहिला सेटा सब यूनाइटेड स्टेट्स रो आम भारत बर करिछि। तो ऑप्शन ए होछि यार करेक्ट आंसर। जो माने ऑप्शन ए आंसर देइछो से मनकर आंसर करेक्ट हबो बट केही बेले आंसर देइनो नो प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जीवा। देन हमर क्वेश्चन रहिछि इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम vote an account is valid for how many months except the year of elections? इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम अनुसार vote an account केते मास पाई की वैलिड अटे? 2 मास पाई, 3 मास पाई, 6 मास पाई कि 9 मास पाई? इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम रे vote an account केते मास पाई की वैलिड अटे? 2, 3, 6, 9 मास पाई। केते मास पाई रे? यार करेक्ट आंसर टी कौन हम? यार करेक्ट आंसर टी हम 2 मास पाई की। ओके द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम
voter account is valid for how many months? केते मंथ? 2 मास. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी इयर्स? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल केते वर्ष पई की अपॉइंट हेथांती? 2 4 5 6 केते वर्ष पई की सीएजी जहां को कहा जाय थे सीएजी केते वर्ष पई की अपॉइंट हेथांती? समस्त को रिक्वेस्ट जे समस्ते लाइव चैट बा कमेंट सेक्शन रे जल्दी जल्दी निजर आंसर कोन हबो देखि की जणे दियो. Comptroller and Auditor General of India is appointed for how many years? केते वर्ष पई की सीएजी अपॉइंट हेथांती? 2 4 6 5 केते वर्ष पई की रे? यार करेक्ट आंसर टी कोन हबो? समस्त आंसर दबा लागि ट्राई करो. भूल हो कि ठीक हो. यार करेक्ट आंसर टी होची 6 वर्ष. ओके 6 वर्ष पई की कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट नेथांती. नेक्स्ट क्वेश्चन टी जिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन रही? Which of the following amendments is also known as the mini constitution of India? Mini constitution of India को amendment को कहा जाता है? 7th amendment, 42 amendment, 44 amendment, 74 amendment. तो यार करेक्ट आंसर टी कोन हबो? को मध्यरु को amendment को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोली कहा जाता है? वेरी गुड. देख यार करेक्ट आंसर टी कौन होगी ना 42nd अमेंडमेंट 42तम संविधान संशोधन को आम भारतर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बा छोटिया संविधान बोलिका कहा जाय थाए. ठीक अच्छे ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर. ओके देन क्वेश्चन को जिबा. नेक्स्ट हमर क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट has been removed from fundamental rights and converted to a simple legal right? Right to life and personal liberty, right to property, right to education, right to freedom of religion. एमान को मध्यरु को फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट्स रो रिमूव कर दिया जाए कि गोटे सिंपल लीगल राइट को कन्वर्ट कर दिया जाए. ओके कौन ऑप्शन रही? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एडुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. वेरी गुड. तो जो माने ऑप्शन 2 आंसर देइछो समानकर आंसर करेक्ट हबो कारण एटा तो समस्त जानिचंती अति इजी क्वेश्चन टा एटा. तो ऑप्शन बी हो यार करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन टी कोन रहिछि देखिबा. Who among the following were the members of the drafting committee of the constitution? वल्लभभाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, राजेंद्र प्रसाद. तो देख एटा भी मध्य एटा टिके कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हबो. ए जो ड्राफ्टिंग कमिटी कथा जते बेले पचारि थाए पिला माने एठी भी मध्य कंफ्यूज हो जाई थांते दे जणक मध्य रे. तो से दी जण किए किए तो जानिबा हमें माने. तो एठी देख एमान को मध्य रु फास्ट माने कहि दियो जे ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर किए एमान को मध्य रु. ड्राफ्टिंग कमिटी रो जेतेबेले हमर कॉन्स्टिट्यूशन तयारी हैला सेतेबेले ड्राफ्टिंग कमिटी गोटे तयारी हेतिला बा बसितिला समान को मध्यरु एठी देखो ई चारटा जको ऑप्शन मध्यरु किए कमिटी रो मेंबर अटंती. हु अमंग द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर. ओके देन क्वेश्चन देखिबा. हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ अपर हाउस कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ अपर हाउस कोटा? राज्यसभा. लोअर हाउस कोटा? लोकसभा. ओके तो एमान को मध्यरु केते जण मेंबर अपर हाउस को नॉमिनेट हेई थांती बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? केते जण को मनोनीत करि थांती कि रे? केते जण को मनोनीत करिवे राष्ट्रपति राज्यसभा को? प्रेसिडेंट को द्वारा केते जण निर्वाचित होई थांती राज्यसभा को? 10 12 14 16. वेरी गुड. तो यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन 2 12 जन को राज्यसभा 12 जन को राष्ट्रपति राज्यसभा को मनोनीत बा मनोनीत नहीं निर्वाचित कर माने कोटा नेचर रे जस्टिसेबल. ठीक अछि. फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, नन ऑफ दीज.
Which of the following is justiciable in nature? कहा को justiciable माने कोटा एमान को मध्यरु justiciable फंडामेंटल राइट डीपीएसपी राइट्स कि एमान को मध्यरु कोनोसिटी नुहे देख फंडामेंटल राइट होची कोन जस्टिसेबल एवं नॉन जस्टिसेबल होची कोटा डीपीएसपी को जस्टिस माने जो जस्टिसेबल नुहे सेटा फंडामेंटल राइट इज जस्टिसेबल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा In the Indian Constitution, the method of election of president has been taken from which country? इलेक्शन जो प्रेसिडेंट कर जो इलेक्शन होता है सेटा को कंट्री रू देखिए कि आमे माने बरो करिचे ब्रिटेन यूएसए आयरलैंड ऑस्ट्रेलिया कौन ऑप्शन को ऑप्शन टा करेक्ट हबो इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री भारतीय संविधान रे राष्ट्रपति जो निर्वाचन होता है से मेथडटा को कंट्री रू आमे माने बरो करिचे ब्रिटेन यूएसए आयरलैंड ऑस्ट्रेलिया यार करेक्ट आंसर टी हबो कोन ऑप्शन 3 इज आयरलैंड ओके ओके देन तो समस्त टिके ट्राई करो कि यार आंसर दबा लगी कमेंट सेक्शन रे ठीक हो कि भूल हो तो आयरलैंड इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा तो समस्त कहि परिबो केते प्रकार रो रीट रहिछि हम भारतीय संविधान रे 5 प्रकार रो 4 प्रकार रो 3 प्रकार रो कि 2 प्रकार रो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीट केते प्रकार रो रीट रहिछि एटा तो कहि परिबो ना समस्ते वेरी गुड सुधाश्री आज पूरा 18 मिनिट लेट ओके नो प्रॉब्लम ठीक अच्छे मुझे से खोजुली जी ये कुआडे पलैला आज गोटे दिन में हाली गले नो प्रॉब्लम देख 5 प्रकार ठीक अच्छे केतेटा 5टा कौन कौन रही कहीदिव टी कौन कौन रही से 5टा जो रीट रही ना को टी कमेंट सेक्शन में जन दियो हेमा 2टा हेनी 2टा रीट ना 5टा रीट रही कौन कौन वेरी गुड हाव्यस करप्स सॉरी हाव्यस करप्स मांडामस सर्टियररी प्रोहिबिशन एंड कोवारेंटो ओके तो 5 प्रकार रो रीट रही हमर ठीक अछि तो 5 प्रकार रो जो माने आंसर देइछो समान रही चलो जीवा Constitution of India deals with which of the following fundamental right पार्ट भी पार्ट 4 आम कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट 4 रे आमे माने कोन पढुचे बा कहा विषय जानूचे वेरी गुड तो यार करेक्ट आंसर कोन हबरे बहुत बढ़िया ओके ठीक अच्छे वेरी गुड डीपीएसपी इज द करेक्ट आंसर अच्छा तेबे डीपीएसपी तो पार्ट आईवी रे रहिला ताहाले हमर ड्यूटीज कोथरे रहिची केते नंबर माने को पार्ट रे रहिची को पार्ट रे हम कॉन्स्टिट्यूशन रो डीपीएसपी तो रहिला पार्ट आईवी रे को पार्ट रे हमर ड्यूटीज रहिची फंडामेंटल ड्यूटीज वेरी गुड आईवी ए ओके तो पार्ट आईवी ए रे रहिची फंडामेंटल ड्यूटीज नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन रहिची देखिबा चलो What is the literal meaning of the term quo warranto? We command to forbid by what authority or warrant? None of these. What is the literal meaning of the term quo warranto? Quo warranto माने कौन? Quo warranto माने कौन? देखा We command to forbid by what authority or warrant? None of these. को वारेंटो अरे एठी ही को वारेंटो को माने को वारेंटो जहाँ आम तो जब ओडिया किना कहीदबा को वारेंट अनुसार किना तुम मते अरेस्ट करिवो कि कौन करिवो सो बाय व्हाट अथॉरिटी और वारेंट ठीक अछि को वारेंट माने बाय व्हाट अथॉरिटी और वारेंट
ओके सो ऑप्शन 3 होची यार करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आमर कौन रही देख हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशनड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 5 7 9 11 5 7 9 11 केतेटा टोटल आमर फंडामेंटल ड्यूटीज रही इजी क्वेश्चन अति इजी क्वेश्चन 11टा रही ना कि ठीक अच्छे देन क्वेश्चन कौन रही देख द मेंबर्स ऑफ द Sabha are elected by the dash elected members of legislative assemblies of the states members of the Lok Sabha people or members of the legislative council the members of the Rajya Sabha are elected by the dash आंसर कौन हम राज्यसभा मेंबर माने कहा द्वारा इलेक्ट होती फर्स्ट ऑप्शन रही इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट सेकंड ऑप्शन रही मेंबर्स ऑफ द लोकसभा थर्ड ऑप्शन रही पीपल फोर्थ ऑप्शन रही मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल सो यार करेक्ट आंसर टी कौन हम देख यार करेक्ट आंसर टी कौन ना ऑप्शन 1 हो यार करेक्ट आंसर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स ओके ओके देन क्वेश्चन को जीवा देन आमर क्वेश्चन कौन रही देख A proclamation of emergency must be placed before the parliament for its approval within 1 month, within 2 months, within 6 months, within 1 year. So, एठी ना correct answer कौन हवा? A proclamation of emergency must be placed before the parliament for its approval. जते बेले emergency कथा आसे ना तो emergency proclamation पाई कि parliament केते मास मध्य रे तारो approval देई थाए गोटे मास 2 मास 6 मास की गोटे वर्ष वेरी गुड 1 मंथ रे कि नहीं ताको दबा को पड़िबो जेहेतु इमरजेंसी रही इमरजेंसी अप्रूवलटा बा प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी गोटे मास मध्य रे ही निहाती भाव में गोटे मास मध्य रे ही अप्रूवल पाइबा दरकार पार्लियामेंट रो ओके सो विद इन 1 मंथ इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 तो जो माने ऑप्शन 1 आंसर देजो समानकर आंसर करेक्ट हबो नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन रही छि देखो Which of the following authority is elected on the basis of proportional representation in India? Prime Minister, President, Governor, Lok Sabha, Speaker. एमान को मध्यरु authority is elected on the basis of proportional representation in India. Proportional representation अनुसारे किए इलेक्ट थांती प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट गवर्नर कि लोकसभा रो स्पीकर तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख प्रोपोर्शनल जे रहा प्रो एम मन रखिदेव किए ना प्रेसिडेंट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट ओके ऑप्शन 2 हो यार करेक्ट आंसर जो माने प्रेसिडेंट आंसर देइछ समानकर आंसर करेक्ट हबो देन हमर क्वेश्चन कोन रहिछि देखिबा Which of the following is not provided by the Constitution of India? Election Commission, Finance Commission, Public Service Commission, Planning Commission. क्वेश्चन रे कौन पचला एमान को मध्यरु कोटा हमरो व्हिच इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा कोटा प्रोवाइड करा जाय नाही इलेक्शन कमिशन फाइनेंस कमिशन पब्लिक सर्विस कमिशन कि प्लानिंग कमिशन यार करेक्ट आंसर कौन हबा ऑब्वियसली कौन हबा सेटा एटा भी इजी क्वेश्चन एटा कौन हम ना प्लानिंग कमिशन ओके सो ऑप्शन डी होची यार करेक्ट आंसर ना प्लानिंग कमिशन इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी डिवीजन ऑफ पावर सेपरेशन ऑफ पावर्स एमान को मध्यरु कोटा गोटिए एसेंशियल एलिमेंट नुहे गोटिए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो ओके रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की डिवीजन ऑफ पावर की सेपरेशन ऑफ पावर्स करेक्ट आंसर कौन हम एमान को मध्यरु कोटा गोटिए एसेंशियल एलिमेंट नुहे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो मन रखो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो एमान को मध्यरु कोटा गोटिए एसेंशियल एलिमेंट नुहे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी डिवीजन ऑफ पावर की सेपरेशन ऑफ पावर्स ओके
सेटा होची कोन सेपरेशन ऑफ पावर्स ओके सेपरेशन ऑफ पावर्स ठीक अछि ओके देन वेरी गुड तो सेपरेशन ऑफ पावर्स जो माने आंसर देइछो समान आंसर करेक्ट हबो देन हमर क्वेश्चन कोन रहिछि देखिबा who recognizes the political parties in India president of India election commission of India ministry of law and justice speaker of Lok Sabha who recognizes the political parties in India political party गुडी को इंडिया रे किए रिकॉग्नाइज करि थांती प्रेसिडेंट की इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टी जेहेतु पचारिची किए करिवो सेटा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ही करिवे ठीक अछि ओके तो ऑप्शन 2 होची यार करेक्ट आंसर वेरी गुड तो जो माने ऑप्शन 2 आंसर देइछो समानकर आंसर करेक्ट अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा अकॉर्डिंग टू 85(1) of the constitution the Lok Sabha must meet at least how many times 3 times each year with no more than 4 months between sessions at least once a year 4 times each year twice a year with no more than 6 months between sessions देखो क्वेश्चन रे पचारिला आर्टिकल 85(1) अनुसारे लोकसभा वर्ष को केते थरो एटलिस्ट बसिबो 3 थरो बसिबो 4 मंथ डिस्टेंस रे कि गो बसिबो कि 4 थरो बसिबो ना देखो निहाती भाबरे लोकसभा 2 थरो बसिबो 6 मास को गोटे थरो निहाती बसिबो आर्टिकल 85(1) अनुसार आम कॉन्स्टिट्यूशन रे एटा लिखा अछि जे लोकसभा निहाती भाबरे एटलिस्ट मिनिमम कोन ना वर्ष को 2 थरो तारो सेशन हबाटा थयो 6 मास को गोटे थरो लिखाए ओके तो ऑप्शन डी हो छै करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन डी रही छै हमरो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जेतेबेले प्रिएम्बल रो स्टार्ट होची कौन से लिखा होची इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स ऑप्शन 2 रही इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑप्शन 3 रही इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए क्वासी फेडरल स्टेट ऑप्शन 4 रही इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनिटरी स्टेट क्लियर देखा जीवो टिके वेट करो हां एबे देखा गला देखो कौन कहई जितेबाला प्रिएम्बल रो स्टार्ट करा होची हम कॉन्स्टिट्यूशन लेखा जितेबाला स्टार्ट होची सेठी कौन लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट हमरो विभिन्नता मध्य रे एकता ही होची हमरो सबुठु बड़ शक्ति नै कि सो ऑप्शन 2 होची यार करेक्ट आंसर इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन Dash can give the Union Parliament power to make laws on matters included in the Ministry of Defense, Prime Minister's Office, Securities and Exchange Board of India, Rajya Sabha. Dash can give the Union Parliament power to make laws on matters included in the state list. कौन हम डैश कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर मेक लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट रे विभिन्न मैटर को जो लॉज करा जाय थे नियम सब जो लागू करा जाय थे ताको पावर किए दबो यूनियन पार्लियामेंट पावर किए दबो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कि राज्यसभा जेहेतु स्टेट लिस्ट कही स्टेट लिस्ट रे किए दबो ऑब्वियसली राज्यसभा ही दबो ओके राज्यसभा हो तार करेक्ट आंसर ठीक अछि ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा इन इंडिया concept of single citizenship is adopted from the French Constitution, the Swiss Constitution, the Constitution of United States of America, the British Constitution. भारत रे जो सिंगल सिटीजनशिप रो कॉन्सेप्ट रही सेटा को आमे माने कोठु बरो करिचे बा कोठारो आमे माने अडॉप्ट करिचे सिंगल सिटीजनशिप रो
फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन रो, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन रो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रो ना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रो। तो ये कि ना यार करेक्ट आंसर टी कौन हम रे? वेरी गुड, ये हम कौन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जो मैंने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आंसर देइछ सेमानकर आंसर करेक्ट अछि। देन क्वेश्चन टी रहिछ देख, नेम द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट वाज पास्ड to provide free and compulsory education of all children between 6 and 12 years of age. 86th Amendment Act, 84th Amendment Act, 83 कि 82 Amendment Act। को Amendment Act अनुसार 6 ରୁ 14 वर्षर पिलाମାନଙ୍କୁ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करा जिवो बोलिका Amendment Act पास करा जायतिला। वेरी गुड, 86th अमेंडमेंट एक्ट होची यार करेक्ट आंसर। ओके, बहुत बढ़िया। तो जो माने 86th आंसर देइछो सेमानकर आंसर करेक्ट अछि। देन हमर क्वेश्चन कोन रहिछि देखो, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डिसकंटिन्यूड द एंग्लो इंडियन रिजर्व्ड सीट्स इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट discontinued the Anglo-Indian reserved seats in the parliament and the state legislatures। 104, 103, 102, 101 अमेंडमेंट एक्ट कौन हम यार करेक्ट आंसर? Which constitutional amendment act discontinued the discontinued the Anglo-Indian reserved seats in the parliament and the state legislature। सेटा होची 104तम अमेंडमेंट एक्ट अनुसार हमर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि रहितिला सेटा डिसकंटिन्यू करा गला। द एंग्लो इंडियन रिजर्व्ड सीट जो रहितिला हम पार्लियामेंट रे सेटा को डिसकंटिन्यूड कराई दिया गला स्टेट लेजिस्लेचर रे मध्य। ठीक अछि, 104तम अमेंडमेंट एक्ट अनुसार। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the chairman of the Public Accounts Committee of Parliament is appointed by Prime Minister of India, President। एटिहार करेक्ट आंसर टी कोन हबो देखो, the chairman of the Public Accounts Committee of Parliament is appointed by the Speaker of the Lok Sabha, Prime Minister of India, President of India, Chairman of Rajya Sabha। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी रो जो चेयरमैन आम पार्लियामेंट रे रही से काहंक द्वारा अपॉइंट होती, काहंक द्वारा से अपॉइंट होती? स्पीकर ऑफ लोकसभा द्वारा, प्राइम मिनिस्टर द्वारा, प्रेसिडेंट किंबा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा द्वारा। कौन हम? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स। देख, पब्लिक अकाउंट्स रहिला लोक मानकर सभा, लोकसभा। तो पब्लिक अकाउंट्स जेहेतु रही ऑब्वियसली लोकसभा ही हम। तो लोकसभार जो स्पीकर रहिबे से पब्लिक अकाउंट्स कमिटी रो चेयरमैन को नियुक्ति देथांती। बुझेला? एमिति ही तुम माने आइडिया करिकी मने रखि पारिबो। ठीक अछि, ओके। देन चलो आउ किछि क्वेश्चन देखिबा। ओके, which of the following article of Indian Constitution dealt with the appointment of Attorney General of India? Attorney General को जो अपॉइंटमेंट दिया जाय थाए सेटा हमरो को आर्टिकल रे लिखा अछि? अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल। एडा भी गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एडा भी पिला माने टिके कंफ्यूज हो जाय थांती। ताहले यार करेक्ट आंसर टी कोन हबो? Which of the following article of Indian Constitution dealt with the appointment of Attorney General of India? को आर्टिकल लिखा अछि अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? आर्टिकल 76। मन रखिबो अटॉर्नी जनरल को कथा आर्टिकल 76 रे लिखा अछि। आर्टिकल 76 अनुसार हम भारतर कॉन्स्टिट्यूशन बा भारतर संविधान रे जणे अटॉर्नी जनरल रहिबे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? एमान को मध्यरु कोउटा करेक्ट स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल को पाई की? फर्स्ट ऑप्शन रहिछि, he has the right of audience in all the courts in India. His term of the office and remuneration is decided by the president. He advises the government of India. All of the above.
एटा ऑल ऑफ द अबव हम ऑब्वियसली ठीक अछि ए तीनटा जाक स्टेटमेंट ठीक अछि देन क्वेश्चन रहिछि हु इज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सीएजी प्रेसिडेंट की सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एमान को मध्यरु हाईएस्ट लीगल ऑफिसर आम गवर्नमेंट रो यूनियन गवर्नमेंट रो हाईएस्ट लीगल ऑफिसर किए अटॉर्नी जनरल किए सीएजी सीएजी माने कौन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की प्रेसिडेंट की सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होचंती अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जहां को विषय रे आर्टिकल 76 रे लिखा अछि मन रखिबो हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होचंती अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि देखो To be eligible for appointment as the Attorney General of India, a person must possesses the qualifications prescribed for a dash. Judges of Supreme Court of India, judges of a High Court, a renowned lawyer, Solicitor General of India. तो एठियार करेक्ट आंसर टी कोन To be eligible for appointment as Attorney General of India, a person must possesses the qualifications prescribed for a Judges of Supreme Court of India. Option A होची यार करेक्ट आंसर वेरी गुड जो माने ऑप्शन ए आंसर देछ समानकर आंसर करेक्ट हबो देन हमर क्वेश्चन रहिची व्हिच वन इज प्रायतः बहुत गुडे क्वेश्चन आसी थाए व्हिच वन about the Attorney General of India. He is the legal advisor of India. His tenure and salary is decided by the President. Has the voting right in the proceeding of the Parliament. He appears before High Courts and Supreme Court in cases involving Union Government. So, true. एमान को मध्यरु false कोटा. Very good. 5 C. हाँ, C टा ही होची ठीक. Okay, जोटा की wrong अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हु प्रिपेयर्ड द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एमान को मध्यरु किए प्रिपेयर करथिले भारतर संविधान को जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर हु प्रिपेयर्ड द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किए प्रिपेयर करथिले रे जवाहरलाल नेहरू ओके तो ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर Next our question रहिछि preamble of our country reads that India is a dash sovereign and secular and democratic secular sovereign democratic ki secular sovereign democratic and republic preamble of our constitution कौन read करता है secular sovereign democratic and republic okay so option D होची यार correct answer Next question. Which of the following describes India as a secular state? एमान को मध्यरु कोटा भारत को गोटे secular state भावरे describe करि थाए. Fundamental right, DPSP, fifth schedule की preamble of the constitution. अति इजी क्वेश्चन कोथरे भारत को गोटे secular state बोली कुहा जायछि आम preamble रे सेटा दर्शा जायछि जे आम भारत होछि गोटे secular state. Okay? Next question रहिछि inclusion of the word fraternity is proposed by जो fraternity शब्दटी रहिछि एटा काहंको द्वारा प्रपोज करा जायथिला डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को द्वारा जवाहरलाल नेहरू को द्वारा जे.बी. कृपलानी को द्वारा ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी को द्वारा fraternity मन रखिबो fraternity शब्द डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को द्वारा प्रपोज हेतिला ओके ठीक अछि नेक्स्ट हमर क्वेश्चन रहिछि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रिएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस बेरुबरी यूनियन केस एंड केशवानंद भारती केस उनिकृष्णन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस कि मिनर्वा मिल्स वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर स्टेट्स कि सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट Supreme Court held the preamble is not a part of the constitution in which of the following cases? कौन है यार करेक्ट आंसर वेरी गुड ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर कारण बेरुबरी यूनियन केस आउ केशवानंद भारती केस जोटा कि 1960 और 1973 रे होइतिला
से ही माने प्रियाम्बलटा आम कन्स्टिट्यूशन गोटे पार्ट नुहे बोलिका सुप्रीम कोर्ट दर्शाई। ठीक अच्छे तो ऑप्शन सॉरी ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर। ओके ओके देन तो सांग माने एतिकी ही क्वेश्चन थिला हमर आज 40 क्वेश्चन थिला टोटल। तो वर्तमान आमे माने डिस्कशन कर देले जहाँ भी हमर क्वेश्चन थिला। ठीक अच्छे जदि आउ कहार किछि असुविधा रही तो मत पचारि पार नचेत वर्तमान क्लास टी को एठी आमे माने एंड करबा। देख समस्ते जो मैंने भी रोच लाइव आसुच समस्त को रिक्वेस्ट सब क्लास रे सबुदिन कहूँ समस्ते टिके को आंसर दबा लगी ट्राए करो कमेंट सेक्शन रे आउ टिके इंटरेक्टिव हम जेहेतु क्लासटा टिके एक्टिव रुह समस्ते। ओके हाँ सेटा सुधाश्री मुझे देखी तुम कमेंट देखी मुझे गत काली जोटा कि रही कमेंट रे। ओके सो हाँ नेक्स्ट क्लास को जो पॉलिटी क्लास हम नेक्स्ट क्लास रे मु ट्राए करी कि फॉरेन पॉलिसी एवं तार रिलेशन जोटा नेबर मान सहित भारत रही से सब उपर क्वेश्चन आने लगी। ओके ठीक अच्छे तेरे सांग मैंने चलो जहाँ भी क्वेश्चन रहा मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन रही इजी किसी मडरेट थिला किसी हार्ड थिला से गुड़ा टिके आउ थे देखने तुम मैंने जापर यही टाइप रे ही आमर क्वेश्चन आसूचे सब एग्जाम रे। ओके ठीक अच्छे तेरे चलो आज क्लास टी को ये रखा काली आमे माने आउ किछि नुआ क्लास करबा किछि नुआ पाठ पढ़िबा। ओके देन ठीक अच्छे वर्तमान क्लास टी को ये रखुची थैंक यू।